That's why I have written here is for your syllabus. First is arc, major arc and minor arc. I will tell you. Second, segment and relation between arc and segment. That will also explain. Third thing is the theorem. The angle which an arc subtends at the center is double at which it subtends at any point of the remaining part of the circumference. Okay. This theorem I had proved yesterday, but in a very shortcut and informative manner. You will see in detail how to give the proof of this, because this is in your syllabus. So whenever any theorem is in your syllabus, so proper system is to be followed. Okay. Let us see now. Another part is the knowledge point. Concentric circle, equal circle, and inscribed circle. Again, there is a theorem. A straight line which join with the center of the circle to bisect the chord, which is not a diameter, is at the right angle to that chord. This is also a theorem. Second, perpendicular from the center of the circle bisecting. So these two theorems are related. So let us see one by one. First of all, I would like to explain this major arc and minor arc. Major arc and minor arc. So that you should not confuse anyway in understanding the fact. Because these things are used, these things are asked in the question exercise. So let us have it. This is a circle. Let us take this is a circle and go in the center. This arc AB, and this is another arc AB. I am just writing like this. Arc AB. Let us see here. C. Arc is less than arc AC. Or we can also write here arc AB this way is less than arc AB. This is from outside and this is from inside. So, or better you can write this. So arc AB is less than arc AC. So this is the mode of representation of this. Now major arc, let us come to the major arc. Means this arc, as you know, the major arc of the circle. I've just indicated this by drawing. So this part is called major arc. And it's सबसे बड़ा arc. So major arc and minor arc is the arc which is of larger length with the major arc, and this is the smaller length of the minor arc. Another part is segment, the relation between arc and segment. Let us join A to B. Let us join it. So this here segment. This segment here is the minor segment. This is the minor segment. Minor segment. And this is the major segment. That means the segment, same segment, is called by different name. They are surrounded by a segment. Sorry, the segment containing the arc, which is smaller. This is the minor segment, and this is the major arc. So this same segment becomes the major segment. So minor segment and major segment becomes one. That means minor segment is that segment which contains minor arc. Major segment is that segment which contains major arc. Here, so this is the fact.
Now, let us have it that segment a relation between the arc and segment. So, this is the relation. That means relation is standard, smaller relation. This arc is greater than the smaller arc. So, this is the relation. This is called. Now, another part, I am coming to third one. Is it clear? Should I proceed now? क्या Yes, सबको yes, समझ में आ गया है? Yes. हाँ, क्योंकि अभी दो कॉन्सेप्ट आपको दिया गया है, जिसका नाम है मेजर आर्क एंड माइनर आर्क. करेक्ट? मेजर आर्क समझा दिया गया आपको, माइनर आर्क समझा दिया गया, सेगमेंट भी समझा दिया गया. ये सेगमेंट यदि छोटे आर्क को रखता है, इस सेगमेंट का नाम माइनर सेगमेंट कहा जाता है, और वो सेगमेंट जो बड़े आर्क को रखता है, दिस इज द व्हाट इज कॉल्ड मेजर सेगमेंट. यदि आप दोनों को जोड़ दें, if you add up minor segment and major segment, you will get a circumference of circle. So circumference of circle is the combination of minor segment and major segment. Clear? Just response it. Yes. Yes, sir. So this is about the major arc and minor arc. Why? Because my intention is to clarify all the technical terms that are going. Let us come to another part. The next part is here. The angle which an arc subtends at the center is double that which it subtends at any point of the remaining part of the circumference. So this is the theorem. Yesterday I had given the proof, but I have simply given the ideas how to get it. Let us represent it in a proper way. How we shall represent? First the given condition, first the figure. Let us draw it. Let us draw the figure. Now, let this is O in the center, and this is an arc AB. Angle which an arc subtends at the center, that will join A to O and A to B, O to B. So this is the angle. Angles which an arc subtends at the center, this angle is double that which subtends at any point of the ring part of the circumference. Let us take a point P in the remaining part of the circumference. Join it. Is the rough diagram. So try to understand it whenever you are drawing of your own. Take compass and scale. Because my intention here is to explain it the whole. So you must take the protector and compass just to be. Now this is the center. AB. This is point. Now join P to B. Also join P to B. Join O to A and O to B. A thick line go down. Join the thick line and this is the. Because if it is visible, automatically the things will go to your mind directly. That's what my intention. This dotted line is even remove or all so that you can understand the fact. Okay. Now, how we shall proceed it? Let us see. Given O is the center of the circle, and AB is an arc. AB is an arc.
P is a point in the remaining part P is a point in the remaining part of the circumference. Circumference is a point remaining part of the circumference. Right part P is a point in the remaining part of his circumference. So here I have written go to, that means as per the given theorem, I have written everything. Because this information is needed for us in giving the explanation. So you have to prove. Let us write on the matter to prove. Angle AOB is equal to twice of angle. So this is the entire situation that I have highlighted. First, write on the draw the figure. Second, write on the given condition. Third is the matter to prove. जो प्रूव करना उसको आप अब आपका जो नेक्स्ट वर्क है is the proof with proper reason. Proof with proper reason. क्योंकि unless you give the proof with reason, your proof will not be accepted. So let us come to the proof. Here we shall make two columns. The first column is the fact, and then reason. आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो उसको लिखो, क्यों ऐसा हुआ, तो आप पहले से देखेंगे. कंस्ट्रक्शन चाहिए तो कंस्ट्रक्शन मेंशन कर दीजिए. Let us use the construction here. Let us write construction because in this theorem construction is required, right? Let us write construction. Very small construction. Join P2, join PU, and produce to suppose M. Join PU and produce to M. So this is the fact that is to be highlighted. That means my intention is to let you know that whatever work you are doing, this work should be reflected by you in the answer books. Otherwise, your understanding will not be clear. You will not be given good marks. So for getting good marks, everything should be clear in the theorem, in writing. So let us say the proof. Here I am writing a proof. Proof means fact. First of all, you shall think here. After that, we shall come to the fact. Let us see. The proof is, I want to take triangle POA and triangle POB. Let us write here in triangle POA and triangle POB. These two triangles are there. Now, you should have the previous knowledge for this. Why I am taking this? Why I am taking this? So your intention should be clear. Then only you can write. I have taken triangle POA and triangle POB. My intention is to show that these two are congruent triangles. Clear? These two are congruent triangles. This I want to show. Let us think about, or we shall say the nature of triangle. Let us see. But my intention is to tell you the congruency of this two triangle. Clear? Let us see the whole planning. If I will say these two triangles are congruent
automatically this angle will be equal, because you must be knowing congruency law. Okay. Yes, sir. Yes, sir. So whenever you have any doubt, just tell me. I'll explain in detail. Because my intention is to make your mind strong in answering all questions in a proper way. Correct? Harshita, okay? Let us see. So I have made my intention clear that why I have taken these two triangles, because I want to show the congruency of this. Means if these two triangles are congruent, then we know there are rule of congruency. SA says there is a AAA, RHS. These are four rules of congruency. Is it clear? Just I'm writing here. SA says if all sides of one triangle is equal to all sides of the another triangle, then these two triangles are congruent, right? This is the first law of congruency. Second is, A says if two sides are equal, in two triangles, two sides are equal, and included angle is also equal, then the two figures are congruent. This is A says. Third is, Yes, sir. A, right? All angles, that is equiangular. You can take no problem. If triangles are equiangular, the triangles are congruent. Of course, these things are also common in similarity of triangle. That we shall see later. But let us have it here. A, and this is number 4. So I hope that you must very good with this fact. If two triangles are having all sides equal, then triangles are congruent. If two triangles having two sides and included angle equal, triangles are congruent. If two triangles having all angles equal, triangles are congruent. And the last one, right? Hypotenuse side. If two triangles are so that angle between two sides is 90 degree, also one side is equal and hypotenuse is equal. So if this condition holds, then you can have the fact of congruence. Since you have asked me to explain the circle which is come up, that's why since I have not explained, so my intention is to let you know everything which is not explained. Correct? Let Sir, us I have a doubt. speak out. Sir, though we are not studying congruency, but matlab So yes, angle sir. A is not in the Yes, case sir. of It's congruency. of similarity. No? it's of similarity. So no, That's why I told, na? That's why I told that this is also rule of similarity, right? yes, sir. Just I'm telling the similarity rule. I was thinking that you can ask like this. First is, if two triangles are having corresponding sides proportional to each other. If two sides of a triangle are in the same ratio, then triangles are similar. Okay? Just your difference between these two. If two triangles, if the sides are proportional, then triangles are similar, right? Let us say in congruency. What is the meaning of congruency? Congruency means if you simply put your palm, one palm to other, let us put it in your mind. This is one palm, this is another palm. If you are putting it, so the second is totally overlapping it. Okay? Congruency means equality. Just you see. Equal and similar. Yes, sir. This is the equal part, and right here similarity. This meaning I have created. Okay? Two equality sign and then similarity sign. But in similarity, there is single symbol. Okay? Now, in fact, is known to you, all
congruent figures are similar. Keep this in mind, your doubt will be clear immediately. All congruent figures are similar, but similar figures are not congruent. You can use all. Is it clear? Yes, sir. सारे congruent figure similar होते हैं, लेकिन सारे similar figure congruent नहीं होते हैं. या नहीं होता. समझ गया? अब आप देखिए Yes, एंगल sir. की बात आ रही है. हम आपको बताएं कॉन्ग्रेस की बात कर रहे हैं. ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया. इसके बारे में आपको डाउट लग रहा था तो कोई बात नहीं. आप दो ट्रायंगल लीजिए, आप दो ट्रायंगल को आप एक दूसरे पर सुपर इंपोज कर देंगे, क्या होगा? एक एंगल दूसरे के साथ मैच कर जाएगा. होगा कि नहीं होगा? इज इट क्लियर और नॉट? Yes, sir. ये आ जाता है क्योंकि हम कोई भी चीज छोड़ना नहीं चाहते हैं. चलिए नेक्स्ट में आरएचएस क्लियर हो गया. इसलिए हम 4 कर सकते हैं क्योंकि आपको ये सारा चीज कहानी बता ही दिया कि ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर. ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर बट द सिंगल फिगर्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट. इसलिए आपके सिमिलरिटी में आरएचएस रूल को नहीं कहा गया है. यू नो सिमिलरिटी में आरएचएस रूल को नहीं कहा गया है. Yes, sir. आपकी सिमिलरिटी में एक ही रूल कहा गया है. एसएस एंड ए. फैक्ट को बता दे एक बार फिर से. If two triangles having two sides proportional, then triangles are similar. Second, if two sides of a triangle are proportional and included angles are equal, then triangles are similar. Third, if triangles are equiangular, then triangles are similar. Okay, only 3 rules are restricted in similarity, but RHS rule is not there. RHS is totally confined with the what is called congruency. Do you know why? Because one side is equal, right? Do you follow me or not? Yes, sir. Yes, sir. One side is equal. That means in similarity, if you apply this rule in similarity, then you will have 2 angle 90 degree, no problem. Also hypotenuse may be equal. Yes, there are also hypotenuse. So there is no question of similarity coming because hypotenuse are equal and then sides, one side is equal. So this equality term is coming in RHS. That's why. But as per my decision is concerned that all congruent figures are similar. So if the two triangles are congruent by RHS rule, so they are similar also. Do you follow or not? Okay. Clear? Yes, sir. But I still have a doubt. Like, let's consider 2 triangles. Both are having the same angles, 60 degree. And the size of a This is one triangle, this is another triangle. Both are having 60 degree. Okay? 60 degree, 60 degree, 60 degree, and just remove it. आप जरा सा कुछ बोलेंगे ना तुरंत हमारे माइंड में आ जाता है. आप ये कहना चाह रहे हो ना? आप यही कहना चाह रहे हो? different sides. Yes, sir. हम साइड गुणा कर दिए. लेकिन आप ध्यान दीजिए कि हम आपको क्या करें कि कांग्रेसी में हम इसको यूज कर सकते हैं. ठीक है, ये बात अलग है कि यूज नहीं होता है, दैट इज अनदर थिंग, लेकिन हम इसको ले सकते हैं. जैसे आपको साथ कंडीशन बता दिया, आरएचएस में सिमिलरिटी नहीं होता है. ओके, तो इसको माइंड में रखिएगा. इससे और क्योंकि यहाँ सिमिलरिटी में चल जाएगा, क्योंकि यहाँ सिमिलरिटी में है if two triangles are having same angles. So this is a proper condition here. Clear? Yes, sir. You must highlight the condition because you have to write like that. They are superposing each other. One triangle is totally overlapping another triangle, right? Yes. So, very nice discussion. So whenever you have doubt, you must clarify your doubts. Okay? You must ask your doubt or try to clarify your answers. So my intention is to take here these two triangles to show their congruency, right?
Now let us write first thing of triangle POA. So let us take PO is equal to PO of this triangle. POA is common to POB. This side is common. So it's a right here first. PO is equal to PU. We can have common. Is the common side. Reason. I have given the reason that is common side. Sides are common. Other part is OP. It is better written like OA is equal to OB. So right here, OA is equal to OB. This is the condition because radii of the same circle is the radii of the same circle. OA is equal to OB. So this OA is equal to OB. Now, another fact we can have it here because one more thing here. Because I will search another side. That side is what? PA. But it is not possible to say like that. ये क्या हो रहा है? हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि हम यहाँ पर isosceles triangle का सहारा ले सकते हैं. Do you follow or not? We can take the help of isosceles triangle. So this is triangle POA and this is triangle POB. This is isosceles triangle because OA is equal to OP. OP is equal to OB. It is isosceles triangle. So base angles are equal. These two angles are equal. We can take help of isosceles triangle because here if you write like this, it will confuse a little bit. But my intention is to tell you the isosceles triangle because OP is equal to OP common, OA is equal to OB, and in general, OP is equal to OA because they are radius of the same circle. So the triangle is isosceles. You can have it here. This implies angle OPA is equal to angle OPB. Because I thought to explain you by the congruency, but the congruency is required. All sides equal, two sides equal, and included angle equal. Included angle is this angle. Also, you are not sure that they are equal or not. I can't use it. RHS cannot be used. So all these property are not coming, but this condition is coming. I write OPA is equal to OPB. This is this triangle OPA and triangle OPB are isosceles. This is isosceles triangle. Since triangles isosceles, meaning thereby is, let us take this angle is alpha. Yesterday I had explained. This is the only theory that is coming. Otherwise, you would have used some other property, but we don't know regarding the chord AP and PB. The theory is equal chords are equidistant from the center. हम कंस्ट्रक्शन कर सकते थे यहाँ पर दिखाने के लिए कि 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है, और एक R हो जाता, ये हमारा H हो जाता, और फिर साइड की प्रॉब्लम आती। इस तरह से बहुत सारी समस्या है, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि PA और PB आपस में बराबर है। आप समझ रहे हो? ठीक है? Yes, sir. इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम कॉन्ग्रेसी को लेकर सोचे थे, लेकिन कॉन्ग्रेसी होना संभव नहीं है। इससे तुरंत हम आइसोसेलेस ट्रायंगल बना सकते हैं। And this is the fact. Triangle OPA is equal to triangle OPB is equal to alpha. Now, after that, we can take the idea of external angle theorem. External angle.
Let us take again. ज्योमेट्री बहुत सेंसिटिव वर्क होता है, बहुत सावधानी से इसको यूज करना पड़ता है, क्योंकि जब आप आंसर देते हो प्रॉपर लॉजिक होना चाहिए, प्रॉपर तर्क होना चाहिए, तभी आप समझ पाओगे क्या है। अब देखिए यहाँ से एंगल OAP, सॉरी एंगल OAMA is equal to angle OPA plus angle OAP. ये आपका है, because the rule is what, रीजन क्या होगा, exterior angle of a triangle is equal to sum of two interior remote angle या opposite angle, two interior है, इसको रिमोट कहा जाता है। एक चीज ध्यान रखिए, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स। सो दिस इज द फैक्ट। सिमिलरली OPB, sorry, AOB, similarly angle AOB is equal to angle OPB plus angle OB। अब आप देखिए यहां से OPA is equal to OAP. Now OPA is equal to OPB. Here I have written OPA is equal to OPB. Sorry. OP, because I have taken only one triangle. First you take this triangle OPA. OPA is equal to OAP, right? Right. OPA is equal to OAP. This is alpha. Similarly, again here you can write OPB is equal to OPA. Angle OPB is equal to angle OBP. Let us take another symbol beta. This symbol I have used. I hope it is clear now. Because the isosceles angle, the base angles are equal. So let us have it. Similarly, MOB is equal to this. Now from this OAMA is equal to OPA is alpha. OAP is also alpha. So this is 2 alpha. An angle, what is called MOB, angle MOB is again beta and this is 2. Therefore, entire angle AOB, let us have it out. Therefore, angle AOB is equal to AOM plus angle BOM. Now, angle AOM is coming as AOM. Yes, it is coming as, sorry. Please highlight whenever I am writing something wrong, just highlight it. Okay? Because I will teach it, no problem. This alpha, no? MOE, right? MOE. is equal to alpha plus alpha. So if it's right here, AOM is equal to 2 alpha and BOM is equal to 2 beta. So this is 2 times alpha plus beta. But alpha plus beta is the angle. This is 2 times angle OPA plus angle OPB. And this is what? 2 times angle
APB. APB. So here is the proof. This is also yesterday I had given this proof can be written as QED, code erate demonstrated. इस तरह का सिंबल है, यानी जो पूछा गया था वही प्रूफ किया। तो ये हमारा अपना इंग्लिश वर्ड है जो हम यूज करते हैं। तो आशा आपको समझ में आ गया होगा। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, लेकिन ऐसे ऐसे पॉइंट पर जरूर आपको कैच करना है क्योंकि रिस्पॉन्स जरूरी है, ठीक है? क्योंकि Yes. हम लोग जो टीचर होते हैं साथ में बोलते भी हैं और लिखते भी हैं, करेक्ट? तो आप देखिए कि कल इसको कितना फास्ट हम किए थे, आज जो है कितना स्लो हो गए। कारण क्या है कि और ज्योमेट्री का नियम है, ध्यान रखिए। ज्योमेट्री के सवाल आप करने जाते हैं पहले आप रफ कीजिए। कल हम आपको रफ बताए थे, रफ करेंगे तो आपके माइंड में हर चीज बैठ जाएगा। Do you follow it or not? Yes. Hello. Yes, sir. Whenever you are doing any geometrical work, first you do the rough. In rough, you try to impose your ideas and get the result. And after getting the result, try to explaining, try to elaborate it. ठीक है? तो जैसा आपको कल बताए थे, बहुत जैसे बताए थे, बोले थे आपको 2 सेकंड में हो जाएगा। लेकिन आज इसको समझाने के लिए हम कितना स्टेप कवर करेंगे। तो यही आपका सिस्टमेटिक प्रूफ कहा जाता है। प्रूफ हमेशा रीजन के साथ होता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। Let us see another question, another concept. ये जब कॉन्सेप्ट पार्ट भी चल रहा है, बीच में जो थ्योरम आ रहा है, उस थ्योरम को समझाते चले जा रहे हैं। अच्छा, एक चीज और यहाँ पर है। कल एक थ्योरम लिखे थे, चूंकि रिलेटेड थ्योरम है इसलिए हमको बताना बहुत जरूरी है ना? वो थ्योरम बताया कि आपको क्या है, एंगल मेड बाय और एंगल in the semicircle is right. ये आपको हम कल बताया, एंगल इन द सेमीसर्कल इज राइट एंगल। तो इसके साथ कर लेते हैं क्योंकि पहले वाले थ्योरम का इसका एप्लीकेशन है, तो साथ साथ समझने में आपको प्रैक्टिस करने में आसानी होगी बिकॉज़ दे आर रिलेटेड प्रॉब्लम्स। लेट अस कम टू द वही चीजें बताया गिवन। पहले फिगर आप ड्रॉ कीजिए, ड्रॉ द फिगर। एंगल इन द सेमीसर्कल इज राइट एंगल, दिस इज सेंटर। नाउ semicircle means a diameter of a circle. Divide the circle into 2 parts. Each part are called semicircle. Clear? Diameter of the circle. Divide the circle into 2 parts. Each part are called semicircle. Correct? Yes, sir. Yes. Join a line AB. Shape is the diameter. So this is the semicircle. This is semicircle. It's also semicircle. So angle in the semicircle is right angle. Means there are many points in arc consist of set of points. An arc consists of set of points. There are many points lies on this arc. So this point may be here. This point may be here. So there is no fixed point for derivation of this. You can take any point. Let us take this point. So let us write down here even O is the center of the circle. अब एक बात है कि गिवन इसको क्यों लिखते हैं? गिवन इसे लिखते हैं कि सारा दारोमदार सर्कल पर ही है। एंगल इन द सेमीसर्कल इज राइट एंगल। आपका सर्कल दिया ही है इसलिए गिवन लिखा है। Let O is the center of the circle and AB is the diameter.
AB को डायमीटर बना लीजिए। Therefore, APB, so number दो, therefore AOBP पूरा जानकारी दे दी आपको, AOBP and AOBQ आपको पूरी तरह से माइंड बैठ जाए, इसलिए से किया है। R बहुत सारी चीज हम लोग अपने से लिखते हैं क्योंकि अंडरस्टैंडिंग शुड बी क्लियर। हम ऐसे भी कर सकते थे, C1 C2 कर देते थे, C1 और C2 और C2 से मिल सकते, इसने नाम दे दिया या आप भी दे दिया, पूरा सर्कल को बांध AOBP एंड AOB, ये दोनों को सेमी सर्कल का करके प्रेजेंट कर। फिर लेते हैं प्रूफ। प्रूफ में let P is a point, P is a point in semicircle, semicircle नाम दे दिया AOB। ये हमारा अपना थिंकिंग है, इसमें एक भी पॉइंट ले लिया सेमीसर्कल। अब ये पॉइंट दिया गया तो हमारा माने समझिए कि कंस्ट्रक्शन में जा रहा है, इट्स गोइंग टू कंस्ट्रक्शन, इसलिए बेहतर है कि आप उसको कंस्ट्रक्शन के ही ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि बोला गया है ज्योमेट्रिक वर्क बिना कंस्ट्रक्शन का नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे ज्योमेट्रिक वर्क हैं जो भी गिवन कंडीशन से हमारा रिजल्ट आ जाता है, लेकिन बहुत से ऐसे थ्योरम हैं जब तक आप कंस्ट्रक्शन नहीं करोगे नहीं आएगा। तो चलिए इसको देखते हैं। P is a point with the semicircle AOB. Join, यहाँ पे से कर दीजिए join A to P, APN, इसको रन कर APN, माने हम बिल्कुल मेरी बस में थिंक कर रही है, सोच लिए कि हमको क्या करना है। हमको ये करना है कि पूरी मटेरियल तैयार करनी है, so that you can have a proper idea for that, right? So let us take it. APB, AP and BP are joined. Let us come to the proof. Proof में हम प्रूफ कर देंगे कि एंगल की ध्यान रखिए जो लिख रहे हैं कि हम एंगल लेंगे, this angle is what? Straight angle. Since it is a straight line, so it's right here AOB. Right here angle AOB is straight angle. Straight angle. The straight angle that is 180 degree. Are you convinced here? Yes, sir. Yes. Because this is straight angle. AOB is straight angle, that is the straight angle value is 180 degree. Now we can have here angle made by this arc AQB. Let us use that theorem. We know angle made by an arc, angle made by arc AQB at the center is double the angle, कर दीजिए आराम से, ये भी लिख दीजिए भाई, जगह कम यूज करने के लिए हम इसको डायरेक्टली लिख दिया। एंगल मेड बाय एन आर्क EQB at the center is double the angle AQB. क्लियर? अब चलिए, therefore you can have it, therefore angle APB angle APB is equal to half of angle AOB. Do you follow? I take it directly half.
No problem. Or you have a big problem? आप जानते ही हो कि AOB जो है डबल है APB का या APB AOB का हाफ है. Clear? Yes, sir. That is. So this implies angle APB is equal to half angle AOB. Angle OB आपको 180 degree है. This is 90 degree. Therefore, angle is the same as the right angle. इसको आप प्रूव कर सकते हैं डायरेक्ट. तो आप सोच रहे हैं कि किस तरह से थ्योरम को लिखा जाता है. बहुत सावधानी से नियम को बताते हुए चलना है, तब आपके अच्छे मार्क्स मिलेंगे. अदरवाइज यदि कोई भी नियम आप फेल कर जाएंगे, कोई नियम यदि मिस कर जाएंगे, तब आपको जो है पूरी तरह से मार्क्स नहीं मिलेगा. ज्योमेट्री में मार्क्स चाहे मिलता है या कट जाता है. समझ गए? कोई भी लॉजिक, कोई भी रीजन यदि आप देने में असमर्थ हो गए, in spite of writing proper writing, will not be awarded good marks. वहाँ पार्शियल मार्क आता है, बट यदि पूरी तरह से रीजन ही देना भूल गए, वहाँ भी समस्या आ जाती है. यानी don't give scope of the examiner to de-evaluate your marks. जैसे 5 नंबर का है तो अब 5 में 5 आना चाहिए. हमारा उद्देश्य यही है, हमारा इंटेंशन यही है कि आपको इस तरह से बताया जाए ताकि फुल मार्क आपको आ जाए. जब भी कोई क्वेश्चन करें पूरी तरह से रीजन के साथ में, एक्सेप्ट के तौर पर आपको बता ही दिए हैं कि पूरी कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री में ज्यादा बता दी. ज्योमेट्री में बिना रीजन का कुछ नहीं होता. रीजन का कितना महत्व है अगर चलिए कुछ कॉन्सेप्ट है, जितना आज करें उतना बता करके छोड़ते आज क्लास में. चलिए आगे कॉन्सेप्ट है, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, दिस इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. This conceptual part is your for understanding. Let us see that. Yes. Next is concentric circle, equal circle, and square circle. The things are very much clear. Concentric circles, circle having same center. Okay. Circles having same center are called concentric circle. Let us take it. That is, this is the center of this smaller circle. Now take this circle, another circle having same center. Take the third circle having the same center. So these circles C1, C2, C3 are given the name. Therefore C1, C2, C3 are concentric circles. The fact is simple. Circles having same center are called concentric circles, right? Equal circle. Two circles are said to be equal. If their radius are same, the fact है क्या radius are same. दो सर्कल को हम इक्वल कब कहेंगे जब उनका रेडियस बराबर होता है. If their radius are same, suppose this is one circle, center O, radius 5 centimeter. See another circle of the center, suppose C, radius is 5 centimeter. So these two circles having same radius, therefore they are equal circles. Clear? Okay? Yes, sir. Yes. Now inscribed circle. So let us clarify everything. Let us see.
the other part, this is the inscribed circle. Now inscribe, the word inscribe is very much clear by the word inscribe. यानी सर्कल क्या है, किसी न किसी फिगर के अंदर है। ध्यान रखिए, सर्कल किसी न किसी फिगर के अंदर है। वो फिगर क्या हो सकता है? वो फिगर हमारा ट्रायंगल हो सकता है, वो फिगर हमारा रेक्टेंगल भी हो सकता है। इस तरह से माने सर्कल which is inscribed in a proper geometry figures, circle which is inside a proper geometric figure. It's called inscribed circle. अब एक नया वर्ड आपको समझ डाल दिया जिसको कहा गया प्रॉपर ज्योमेट्रिक। प्रॉपर ज्योमेट्रिक फिगर क्या मतलब है कि ये हमारा ट्रायंगल है, करेक्ट। अब ट्रायंगल कैसा होगा भाई, कोई कंडीशन है क्या? क्या इंस्क्राइब सर्कल किसी भी ट्रायंगल में हो सकते हैं क्या? ये तुम्हारा क्वाड्रिलेटरल है, क्या कोई कंडीशन है क्या कि सर्कल इसी में होता है? सर्कल पैरेललोग्राम ही होता है, सर्कल रोम्बस भी होता है। बात समझ में आ रही है? यस सर। यस। ये जो बातें आपसे कर रहे हैं इसका मतलब है, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं कहा गया है, ध्यान रखिए, यहाँ सिर्फ इंस्क्राइब कहा गया है। इंस्क्राइब सर्कल में तो सीधी सी बात हो गई, ये वाली ट्रायंगल है जिसमें एक सर्कल ये भी होगा। दिस सर्कल इज इनसाइड द ट्रायंगल, क्लियर। लेकिन यहाँ से कुछ रूल दिखाई नहीं पड़ता है। हम ऐसे इंस्क्रिप्शन की बात करते हैं जिसमें प्रॉपर रूल हो, यानी आप सर्कल ड्रॉ कर रहे हो तो सर्कल साइड को टच करना चाहिए। देखिए कहां से कहां ले जा रहे हैं, ध्यान दीजिए, है ना। इस फिगर में हम सर्कल के बारे में कुछ नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ एक सर्कल है जो ट्रायंगल के अंदर, क्लियर। इसके अलावा यहाँ कुछ नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन यदि हम इसी ट्रायंगल, इसी सर्कल को यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं जिसमें सारे साइड को टच करता है, यहां से हमको एक थ्योरी दिखाई देता है। यानी दिस सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इनसाइड द ट्रायंगल ABC, also the circle is touching all sides of the triangle. So since the circle are touching all sides of the triangle, therefore there is a proper rule for that. समझ गए? कुछ नियम होगा। क्या नियम होगा? टेंजेंट टू ए सर्कल, तो आपको बताया जाएगा बाद में, सेकंड टेंजेंट के बारे में वो समझाएंगे हम, कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसे पूछा जाता है। यहाँ से कुछ आप कर सकते हो, लेकिन यहाँ से कुछ नहीं कर सकते। तो you follow me or not? यस Clear? But both are inscribed. ध्यान रखिए। But it is inscribed with proper condition. That's why I have taken here. Circle which is inside the proper geometric figure is called inscribed circle. हालांकि हमारे भाषा से ज्योमेट्रिक फिगर तो कुछ भी हो सकता है, अच्छा ही है, ये भी ज्योमेट्रिक फिगर है, ये ट्रायंगल है ही, इसलिए हम ऐसा कुछ कंडीशन यहाँ लगाएंगे। लेकिन हाँ, एक कंडीशन वर्क है। कंडीशन वर्क क्या है? ये सर्कल का एक पार्ट AB को टच कर रहा है, BC को टच कर रहा है, AC को टच कर रहा है, तो AB BC AC हमारा टेंजेंट हुआ। अब टेंजेंट की क्या प्रॉपर्टी है, नहीं है, कैसे है, क्या है, उसका विशेष सवाल है। दूसरी तरह से मान लीजिए कि सर्कल है, इसके अंदर में जो पूरे साइड को टच कर रहा है, आपको लग रहा हो कि फिगर जो ड्रॉ किए बिल्कुल ओवल शेप दिखाई पड़ता है, नो प्रॉब्लम। लेकिन जब सही ढंग से रूल आएगा तो आप यहाँ से कुछ कर सकते हो, है ना, क्योंकि ज्योमेट्री को ही कहा जाता है भाई, इसको आप ज्वाइन कर दो, इसको आप ज्वाइन कर दो। यहाँ से कुछ दिखाई पड़ रहा है, क्या दिखाई पड़ रहा है? ये हमारा एक आर्क है, उसके बाद एक दूसरा आर्क है, तीसरा आर्क है, इस तरह से बहुत सारे आर्क हमारे पास। यानी यदि
स्क्वायर हो जाए तो स्क्वायर जैसे भी काम होगी, यदि कोई दूसरा फिगर हो जाए, रेक्टेंगल हो जाए तो रेक्टेंगल। मतलब है कि प्रॉपर ज्योमेट्रिक फिगर में यदि कुछ हमारा दिया हुआ है तो आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। जब भी सवाल को लेंगे हम तरह तरह के टेक्निक्स को डेवलप कराएंगे। ये नहीं कि हम किताब में जो लिखा उसी को चलते रहेंगे, कुछ ऐसी भी चीज हम हाईलाइट करते रहते हैं जो लगता है कि नहीं है लेकिन जरूर है, क्योंकि हम तर्क पर चलते हैं। चलिए, ये आपका जो फैक्ट है ये क्लियर हो रहा है। जैसे जैसे जरूरत पड़ेगा वैसे कर लेंगे। अब जैसे कि है ना, इक्वल आर्क सब्टेंस इक्वल एवरीथिंग इक्वल, जब ये दोनों आर्क बराबर है, ये सेंटर पर एंगल बराबर होगा, यानी ये सेंटर होना चाहिए। इस तरह से यहाँ पर कोई हाईलाइट नहीं किया गया, सिर्फ हमारा मकसद था इस काइंड सर्कल का मतलब क्या है, यानी सर्कल किसी ज्योमेट्रिक फिगर के अंदर में ड्रॉ किया गया। क्लियर हुआ? Sorry to interrupt, but we have another class in a minute. Yes, sir. So should we wrap up? Why not? Leave it here, है ना? Thank you, Okay. sir. Okay, thank you. This will say this thing Thank you, sir. needs more discussion. Okay? Thank you for joining. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you.